Hi everyone, I hope you are well. I'm Sandeep and most welcome again at this YouTube channel. I hope you are well and you are doing well. In this video we are going to talk about of the parents, and he is dedicated of all parents and all responsible who is in his family. I would like to say, my dear friends, what become to me and what become to you. We are watching, we are seeing surrounding at my atmosphere. I think that your children, my dear parents and my dear older and elder people, you have to watch of your parents. I think that you must know that what they want to do in his life and in which field they want to go. I am watching nowadays parents says that you have to make doctor, you have to do engineering, and boys and girl making ambition, they are watching in his future a different field. But I think that they, our parents and our responsible older and elder, they are taking serious of my future. I am thinking deeply and I know that at the start. But I would like to say, my respected older and elder and honorable parents, what do you do your child? You must know that and you think about him, because if he will do proper work taking for his ambition, he will succeed. Otherwise it distract his mind, frustration, he think lot of us what we have to do, घुटन सी महसूस होगी, दे फील एज why do you do make pressure at as type. I think that people doing to you making pressure, वैसे ही तनाव दे रहे हैं आप लोगों को, टेंशन दे रहे हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ आर मेकिंग योर चिल्ड्रन. यू विल डू इट, तुम यह कर पाओगे, हाउ यू विल डू इट, लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ क्वेश्चन पुट अप इन माइंड. But my dear parents and my dear older and elder people, I would like to say, you always stand with your child, with your children. If you are giving a better future, you must know that and you must understand deeply of your children talk. I am saying, and people are burning at this talk, you know that, and you have to support your children. Only one life you have, you survive happily, not making hate of people. You think, and what become, my dear friends, nowadays I am watching as people who कहते हैं जेब में थोड़ा वजन क्या बढ़ गया, they are ignoring of his फैमिली, अपने आप अपने फैमिली को ही इग्नोर करने लगे. वाई दे डू एज आई डोंट नो डैट, बट आई थिंक वी मस्ट नॉट डू, वी मस्ट लिव टुगेदर एंड वी सर्वाइव ये बेटर एंड ये रिस्पॉन्सिबल मैन या आर पर्सन, मेकिंग ए पर्सन बन करके रहना चाहिए. एंड आई थिंक दैट व्हाट वी आर वाचिंग, what we want to do and how we can gain better in my life. If our parents making strength behind myself, I think that there is no one can stop to me, there is no one can stop to me which succeed, जिससे कि मैं सफल ना हो पाऊँ. I think आज तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, विनम्र अभिवादन एंड विनम्र रिक्वेस्ट आप लोगों से. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, व्हाट योर चिल्ड्रन डू इन हिज लाइफ, यू ऑलवेज स्टैंड विथ हिम एंड यू ऑलवेज सपोर्ट देम, बिकॉज पीपल आर मेकिंग प्रेशर देम. ये कर रहा है, बाद में इफ़ यू आर गो टू सक्सीड इन योर लाइफ, पीपल विथ स्टैंड टू यू. आई नो एट दिस टाक आई हैव वॉच लॉट ऑफ पीपल एज. If you are doing work alone, I think that you will succeed in your life. You have to focus
at yourself, my dear friends. You have to focus at yourself. You must know that at this talk we are going to write something dedicated, dedicated all parents, all parents. You must support your children. You must support your children, your children. If you are giving better future, यदि आप एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो you always support. What become in my life? Man go to break that time and that place when, अरे यार ये क्या हो रहा है, man and person go to that place when he is doing work, lot of us, and he do not succeed in his life. He think that after 20-25 years studying, I have nothing, I am worthless, I am useless. But my dear friends, you must know that you must think deeply in your mind. Where are you stand? You are a responsible person. It is a different talk, people comparison to you. If you have a job, they would understand you are educated people. यदि आपके पास एक अच्छा जॉब रहेगा, यदि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि आप एजुकेटेड हैं. अदरवाइज दुनिया है, द वर्ल्ड थिंक एल्सो. सो you have to start something if you have knowledge, if you have to gain, if you have to read. किसी ने कहा था my dear friends, यदि आपने डीपली अध्ययन किया है तो you have not to live, you have not to face unemployment in your life. I am watching them, I am listening as type people, lot of us. And कहते हैं एक शायरी है जिसके माध्यम से किसी ने संदेश दिया है कि कहीं आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड यू हैव नॉट सेलेक्टेड, इफ़ यू हैव टैलेंटेड लॉट ऑफ अस, देन यू मस्ट थिंक एज तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, तू जमाने में सनम अकेली तो नहीं, तू जमाने में सनम अकेली तो नहीं. वी आर टॉकिंग ऑफ जॉब. मैं जॉब के बारे में कह रहा हूँ मेरे दोस्त. तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मिलेंगे जमाने में लाखों हंसी, मिलेंगे जमाने में लाखों हंसी, तू जमाने में सनम अकेली तो नहीं. यू हैव टू नो एट दिस टाइम में वी आर टॉकिंग जॉब. माय डियर फ्रेंड्स, if you have talented, you must put out your talent. And कहते हैं जब लोग आपको कमज़ोर समझने लगे, when people would understand to you, you are worthless, you are weak, you must feel at this talk. आपको इस बातों का एहसास करा देना चाहिए, आई एम नॉट वर्थलेस. इस बात का एहसास कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है. डेट टॉक इज नीड टू मोर फील ऑफ डेट पर्सन, अदरवाइज दे वुड नॉट अंडरस्टैंड योर वैल्यू इन योर लाइफ. आफ्टर 25 ईयर, आफ्टर 25 ईयर 20 ईयर और इसके बाद में 28 ईयर. आफ्टर 28 ईयर्स, चुप रहो यार, क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना अभी. मैं कह रहा हूँ कुछ, आई एम सेइंग समथिंग. इधर देखो, क्या, इधर आओ, इधर आओ, देखो. अब निकलो यहाँ से, खिला के रख दियो. हटो यार यहाँ से. वॉच रखो, यहाँ वॉच रखो, रखो वॉच. लो इधर को, इधर दो. हाँ, वी आर टॉकिंग
25 year, I am 28 year. After 28 year study, we are watching, we are nothing. People are not getting understand what am I. वो लोग हमारा कंपेरिजन उन लोगों से करने लगते हैं. दे कंपेयर टू मी. तुमसे ज़्यादा तो ये बंदा कमा रहा है, ये अनएजुकेटेड 15-20,000 कमा रहा है, और आप 20 सिर्फ ओनली 5,000 3,000 यू आर वर्किंग जॉब. हाउ वी कैन डू एज यार. इतना नॉलेज होने के बाद में इफ आई एम लिविंग अनएम्प्लॉयमेंट, इफ यू आर फेसिंग व्हाट वी विल डू. वी आर फेसिंग सम इशू. निकलो यहाँ से, अभी कह रहे वीडियो बना रहा हूँ. हाँ मैं इधर इधर चलो. हमारे घर पर 2 मोंकी हैं, बहुत ही दुष्ट हैं. बिस्किट बिकेट बोलते हैं, बिस्किट बोलते हैं. तो वी आर नॉट इंक्रीजिंग दिस वीडियो लॉट ऑफ अस. And my dear friends, I would like to say focus at yourself and gain better response, gain better result in your life. See your result. Watch. W-A. Watched your result of people. आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाइए, इतना मेहनत कीजिए अपने आप पर मेरे दोस्त. If you want to get succeed in your life, you must do work lot of us and you put out your result of people who are getting about yourself. He is worthless. He cannot do anything in your life. We would not increase in this video lot of us, but my dear friends, you focus at yourself and I hope you will succeed in your life. You must know that at the start and you have to need know work at yourself. Thank you my dear friends. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Constitution of India. Love you, all of you. I hope you will get better response in your life. If you are watching this video at my Facebook, you can share, you can like, you can keep your thoughts in the comment box and you can follow to me if you are watching at this video on the Facebook. If you are watching at my YouTube channel, my dear friends, you can subscribe at this YouTube channel and you can also share and keep your thoughts in my comment section. Thank you my dear friends. Love you, all of you. Jai Hind, Jai Bharat.